So this is Jaimin Shaukar. I'm an investor, trader, and research analyst at Tata Wealth, one of the leading PMS companies in India. So I recently read a book called Michael Trend Following by Michael Cowell, and it has really opened certain doors for me. So I thought just I want to record myself and just share my learnings to my friends. So yeah, so this is all about trading. The video is all going to be all about trading. So if you're not trader, you can utilize your time somewhere else. And if you're a trader, do watch it. I mean, you will get some very good insight here, right? So let me start. Yeah, this was the book, Trend Following by Michael Cowell. So what I'll do, मैं क्या करूँगा इसमें that it is a very long book, 450 kind of pages, and it contains a lot of information like greatest trend follower, great trend following histories, their performance data, some of the great concept, and more than that, it contains the mindset, how a trader can have the mindset to an approach of trading, and it contains a lot of information. So what I'll do that whatever the relevant and main concept I learned, I'll just review it, and then we will go to trend following system. What is it? And it's a very simple thing. क्या है मैं आपको बताऊंगा. Then in the last thing, what are my key learnings, right? So before we start, those who don't know what is trend, उसमें तो थोड़ा बात कर लेते हैं. What is the trend? Now, trend is like something is making higher high. So क्या होता है, एक स्टॉक की जर्नी रहती है कि स्टॉक कैसे चलता है. ठीक है. सो आई जस्ट वांट टू गिव यू दैट कॉन्टेक्स्ट, फिर हम आगे बात करते हैं. कभी भी आपने पहाड़ चढ़ा हो तो आपको कुछ मेमोरीज होगी कि कैसे कैसा आपका अनुभव रहा होता है. सो पहाड़ चढ़ा हो या किसी भी कोई पवित्र स्थान जो पहाड़ों पे है वहां आप चल के गए हो. जैसे आई यूज्ड टू गो तिरुपति नो एवरी ईयर सम टाइम बैक, एंड वन ऑफ द टाइम आई वेंट तिरुमला फ्रॉम स्टेप्स, राइट. सो ये उसी की पिक्चर है, तिरुमला देवस्थानम. जब नीचे से जब जाते हो तकरीबन 3,500 स्टेप्स है. तो आपका क्या अनुभव रहता है जब आप पहाड़ चढ़ते हो? क्या होता है, मान लो आपको एक बहुत लंबी चढ़ाई है तो आपको बहुत जल्दी शुरुआत करनी पड़ती है. आपको जल्दी जगना पड़ता है और अपनी चढ़ाई बहुत सुबह-सुबह स्टार्ट करनी पड़ती है. जैसे अगर हमें मान लो तिरुमला शाम को 6 बजे पहुँचना है तो हमें शुरुआत करनी पड़ती है सुबह 7 साढ़े 7 बजे. क्या होता है जब आप स्टार्ट करते हो वो स्टेप्स चढ़ना, बिकॉज़ यू हैड अ वेरी ग्रेट स्लीप लास्ट नाइट, आप बहुत फ्रेश होते हो, एंथुसियाज़्म में होते हो, तो आप शुरुआत की जर्नी होती है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही फटाफट करते हो. आप बहुत कम टाइम में अपने ज़्यादातर स्टेप चढ़ लेते हो बिकॉज़ यू आर वेरी फ्रेश, राइट? देन व्हाट यू विल डू दैट एट 9 एएम यू नीड अ ब्रेक, कि भाई अभी ब्रेक लेना है, आई हैव टू डू अ ब्रेकफास्ट और व्हाटएवर, राइट? तो आप एक 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हो. फिर अगेन आप शुरुआत करते हो, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हो. और बीच में अभी क्या, बिकॉज़ यू आर इन अ कांस्टेंट पेस, आप बीच में थोड़ी ब्रेक लेते रहते हो 5 मिनट का. भाई थोड़ा 15 मिनट मैं चला हूँ, 20 मिनट चला हूँ तो 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ. फिर से 15 मिनट 20 मिनट चल रहा हूँ तो 5 मिनट का ब्रेक लिया. फिर तकरीबन ढाई बजे आप बिकॉज़ नाउ यू आर स्टार्टेड फॉर वेरी लॉन्ग, और आपको भूख भी लगी है, लंच का टाइम भी हो रहा है, सो यू विल टेक अ लॉन्ग ब्रेक. आप एक आधे आधे घंटे का ब्रेक लोगे, राइट? आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट अगेन एंड यू विल कंटिन्यू योर क्लाइंबिंग. फिर आप वही 15-20 मिनट चल रहे हो, 5 मिनट ब्रेक रहे हो, 15-20 मिनट चल रहे हो, 5 मिनट ब्रेक कर रहे हो. और ऐसे करते-करते आप बहुत ही ऊपर आ गए हो. अभी अराउंड 5 पीएम आपको दिख रहा है देयर इज़ ओनली 200 स्टेप्स रिमेनिंग. आपको वो गेट दिख रहा है कि मैं इसमें पहुँच ही गया. Despite of you're very exhausted, you have started from since 7 AM. आपको पता नहीं एक अनोखी ऊर्जा मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी, या ये 200 ही स्टेप है ना खत्म कर दें तो सो यू विल लास्ट जो आपकी जर्नी होती है वो बहुत ही फास्ट आप जाओगे कि भाई बस अभी खत्म करना है, मुझे जाना है ऊपर और होटल में जाना है. सो भी अब बहुत ही जल्दी वो चढ़ाई खत्म कर दोगे लास्ट फेज में. This was the most common experience when you climb a mountain.
and this is the exactly how stock works. किसी भी स्टॉक की जर्नी इसी तरह की होती है. 80% of the stock, runs like that. The remaining 10% are like cyclical stocks जो फटाफट चढ़ते हैं और फटाफट ही नीचे आ जाते हैं, रॉकेट काइंड ऑफ थिंग. एंड जो रिमेनिंग और 10% है, those are like consistent compounders. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ बढ़ते ही रहते हैं. So this is the journey of stock. They rise, they take rest. They rise, they take rest. No, अगर जर्नी की शुरुआत हो रही है तो आपने कोई भी स्टॉक बड़ा लंबा कंसोलिडेशन से ऊपर आएगा, ठीक है, पूरी नींद खत्म करके वो ऊपर आएगा, एंड देन इट विल राइज, इट विल टेक रेस्ट, इट विल राइज, इट विल टेक रेस्ट. सेम वे ऑन द डाउन साइड, राइट? वो गिरेगा, रेस्ट लेगा, गिरेगा, रेस्ट लेगा. दिस इज द नेचर ऑफ स्टॉक. सो दिस इज अ ट्रेंड. वो बढ़ रहा है आप ऊपर, फिर थोड़ा रेस्ट लेगा, फिर वो हाई हाई मार रहा है, फिर वो थोड़ा रेस्ट लेगा. दिस इज द context behind the how trend works, right? Some of the example, so you can see that how a good trend works. Like this is a Tata Elxsi, so I bought it around 1200, and it is behind it is a very good consolidation. So it started, and then it is going, it's rising, then taking rest. It is rising, then taking rest. It's rising and taking rest, right? फिर लास्ट की जर्नी देखोगे तो आप बहुत ही सुपीरियर की उसने. 6000 से सीधा 10,000 की जर्नी उसने बहुत ही कम समय में पूरी की. Same way in CDSL. So I bought it around 300 rupees and it lasted for 1600. और आप देखो तो एक कंसोलिडेशन नींद पूरी करके आ रहा है. शुरुआत की चढ़ाई, शुरुआत की प्राइस राइज बहुत ही जोर से ली उसने. फिर थोड़ा कंसोलिडेशन, एक लंबा ब्रेक लिया, फिर वो बढ़ रहा है 3-4 वीक, 2 वीक गिर रहा है, बढ़ रहा है 3-4 वीक, 2 वीक गिर रहा है. एंड लास्ट देखो आप, अगर 1100 से 1500 की, 1100 से 1200 की कैंडल बहुत ही फास्ट पेस में बढ़ गई. दिस इज हाउ ट्रेंड वर्क्स, और दिस इज हाउ जर्नी ऑफ स्टॉक्स. सो लेट अस गो फॉरवर्ड. सम ऑफ द कंसेप्ट आई वांट टू गिव यू. ये सब क्या होगा, ये सब अगर ये सब चीजें आपके माइंड में रहेगी तो यू विल बी अ बेटर ट्रेडर. बिकॉज ट्रेडिंग में क्या है, इट इज नो नथिंग, एनालिसिस पार्ट इज वेरी जस्ट 20%. It's more about your consistency and your approach, and more about your mindset, right? So BBC, the concept is BBC Bhav Bhagwan Che. So in the book, Michael Cowell has gives so much emphasis on price. And there is a very cliched thing, BBC, we also say that Bhav Bhagwan Che, but why Bhav Bhagwan Che? Just let's go deeper into it. So there are two kind of analyst, I would say, fundamental analysis and technique analysis. So for technique analysis, they assume that price give every information. They have to follow the price. So whatever the price is saying, we have to follow it because it contains a discount every information. मान लो किसी स्टॉक की प्राइस चल रही है 1000 रुपया, वो 1000 रुपया पे उस वक्त उस टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन है मार्केट में, वो सब डिस्काउंट होके ही वो 1000 रुपया दिख रहा है. अगर मान लो कल उठ के कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, जैसे पोलीकैब की अभी न्यूज आई कि इनकम टैक्स के रेट पड़ी, तो उस वक्त वो प्राइस वो भी चेंज हो जाएगी. वो इन्फॉर्मेशन को तुरंत ही डिस्काउंट कर लेंगे, देन वी हैव टू फॉलो इट. वी डोंट नो, हमें नहीं जानना है कि क्या न्यूज आई है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. वी हैव टू जस्ट फॉलो द प्राइस. सो दिस इज हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क. वी हैव टू फॉलो द प्राइस, एंड प्राइस इज सुप्रीम. इट कंटेन्स एवरी इन्फॉर्मेशन. व्हाट हैपेंड दैट, सी, अगर कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट हो, अगर वो बड़ा एफआई क्यों ना हो, बड़ा डीआई क्यों ना हो, वॉरेन बफेट क्यों ना हो, पुलक प्रसाद जी क्यों ना हो, their every analysis, their every philosophy, their everything have to narrow down to only two decision: buy or sell, right? There is no other thing in the market. So whatever their analysis do, they have to narrow down to buy or sell. और जो buy or sell करेंगी तो एक price बनती है, and it will reflect on the chart, or it will reflect on your screen, and we have to follow it. So this is the fundamental concept of technical analysis. Versus fundamental analysis, उसमें क्या होता है, that we presume that no, market is giving you wrong data, market is wrong and we are right. So whatever I did the analysis of particular stock,
और मार्केट में उसके प्राइस चल रही है 1,000 रुपया, तो मैं और मेरी प्राइस आ रही है मेरे एनालिसिस के अनुसार, मेरी मेरी वैल्यू के अनुसार, राइट, मेरी वैल्यू के अनुसार वो आ रही है 500 रुपया। तो मैं ये प्रेज्यूम के चल रहा हूँ कि मार्केट गलत है, मेरी प्राइस सही है, और मार्केट की प्राइस को मेरी प्राइस पे आना पड़ेगा। दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस एंड यू वर्क ऑन दैट। सो as a technique analysis or as a trader, we go with the Bao Bhagwan Che. So this is the main concept, fundamental and technical. Also, there is an investor and trader. So investors are those who participate in the market as they are owning a business. They want to own a business. They don't want to trade. They want to build a wealth. वो इस माइंडसेट से आते हैं कि मैं ये बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है जो 25 कारों से ही दे रहा है, इतने अच्छे मुझे भाव पे मिल रहा है, 15 के पीवी पे मिल रहा है, मैं इसको बाय करता हूँ। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा एज अ ओनर, मैं भी ग्रो करता जाऊंगा। So investor come with this mindset. And for trader there is only one god, which is profit. They don't know what they trade, they don't know which side they trade, they just want profit. They don't know which market they trade. अगर कल उठ के कमोडिटी में कुछ प्राइस एक्शन आ रहा है, आई हैव टू डू दैट। अगर कल उठ के कोई गोल्ड में प्राइस एक्शन आ रहा है, टू डू दैट। अगर कल उठ के मुझे लॉन्ग साइड में कुछ आ रहा है, अगर कुछ कल उठ के कुछ शॉर्ट साइड में आ रहा है, आई हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट माय स्ट्रेटेजी एंड आई हैव टू make profit. This is a trader, right? Also, in trading, there is a one advantage over the investors. There are some rare but very impactful events which investor cannot take advantage of, right? अगर अगर अभी क्रूड बीच में माइनस में चला गया था, so some UK traders have made a lots of money by shorting crudes. Like अभी polycap आया, polycap में जो आया, short people has made a good amount of money in a very short span of time. So trader can utilize this low impact, high impact, low probability trade, right? And in trader, there are also two type of trader, and this is where a trend following concept comes, and it distinguishes with other trading strategies. So predictive trader and reactive trader. So predictive trader, like I like those traders जो उस टाइप का टेक्निक एनालिसिस जो किसी चीज को प्रिडिक्ट करता है कि मान लो अगर फिबोनाची है तो अगर ट्रेस करेगी तो ये यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है। अगर ये मेरा एक कप एंड हैंडल का पैटर्न है, यहाँ से वो अगर हाई करेगा तो देयर इज अ चांस है वो 50% रिटर्न दे ही देगा, right? Or there are number of studies we do in this thing uh, as a predictive trader, and in my experience it is the most no मतलब कुछ नहीं करना चाहिए, because I lost a good amount of time and money while doing this. And second thing is a reactive trader. So what Michael Cowell say, that we don't know anything. We really don't know anything. We have to just follow the price. So if price is making higher high, we don't have to anticipate कि अभी यहाँ से हायर करेगा या लो जाएगा। We have to just okay हायर हाई कर रहा है, मुझे मेरी पोजीशन लेने दो, फिर वहां से वो जहां भी जाए आई डोंट नो। अगर नीचे जा रहा है तो मेरा प्रीडिफाइंड एसएल है तो मैं निकल जाऊंगा। अगर ऊपर जा रहा है तो राइड इट, आई हैव टू राइड इट टिल इंफिनिटी। So that's how distinctive predictive trader and reactive trader. We all have to be reactive trader. I really think that. Second thing is decision making. Some of the concept of decision making in the book, which is Occam Razor. So in that, what he says or what the concept says is you have to pick a simpler solution for a complex problem, right? Let's say for an example, you have your empty room, or I'm not getting the example, but let's say let's come to the second point: fast and frugal decision making. So you have to be mechanical. So your trading decision should be very fast, and it should contains very least decision points. अगर आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हो, तो आपका डिसीजन टाइम उसमें फिर जजमेंट इन्वॉल्व होता है। जजमेंट इन्वॉल्व होगा तो आपके बायसेस इन्वॉल्व होंगे, और आपके और वो बायसेस आपको
आगे जाके तकलीफ दे सकते हैं, बिकॉज यू नो व्हेन यू वी हैव टू मेक आवर डिसीजन वेरी फास्ट एंड वेरी मैकेनिकल, कि जो सिस्टम बोल रहा है वही वी हैव टू फॉलो, राइट? So this is thing, and second thing is process versus outcome. So we have to make our process very robust. ऐसा नहीं है किसी चीज करने से आपको अगर रिजल्ट आ रहा है तो यू बिकॉज ऑफ दैट रिजल्ट यू आर डूइंग दैट. इट इज उल्टा. You have did something good, and because of that you got the result, so you have to focus more on your process. And I really feel that the best thing you can learn from your trading, if you are going right or wrong, is from your P&L. So let's say if your profit is making profits आ रहा है आपको, तो आप शायद हो सकता है कि आपकी प्रोसेस अच्छी है। जैसे आप इसी टेबल में देखो, अगर आउटकम अच्छा है एंड देयर आर 2 चांसेस कि आपकी प्रोसेस भी अच्छी हो सकती है और गलत हो सकती है। अगर गलत है तो ये लक है, वो जब लंबा नहीं चलेगा, आपको कभी ना कभी वो लॉस देगा, और जब लॉस देगा देन यू विल रियलाइज दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग, सो यू हैव टू इम्प्रूव इट, राइट? So this is it. Second thing is performance data. So in the book, Michael Koval says that as a trader, we have to focus on absolute return rather than comparing ourselves to the benchmark. हमसे benchmark से हम सिर्फ 1% आगे हो गए तो we are a good trader. It's not because benchmark have their limitation also. Second thing, trend followers always prepares for drawdown and the strong performance. So there, if you are if you are in the market from last 4 5 years, you will really know about the cycles. So those cycles also play in your performance also. So if you have a good return in 1 2 years, like you have made a good 50 60 returns on your portfolio, it's a very in this market it looks very small, but let's say you have made that, so there is a very high probability that in the following year you will not do well, and it's very completely normal. So don't have to be super aggressive to change your process. It's a cycle thing, and you have to face a good drawdown after a super performance. Volatility is not a problem. Actually, volatility is not a problem. The fear of the volatility is a problem. So क्या होता है, हम इतने घबरा जाते हैं कई बार कुछ प्राइस एक्शन देखते कि ना चाहते हुए भी, ना हमारा एसएल ना होते हुए भी हम अपना स्टॉक काट देते हैं। मान लो किसी सेटअप में कोई स्टॉक आ रहा है, वो वहां से बढ़ गया 50% 60% सिर्फ 1 महीने में, हमारा एसएल तो बहुत ही नीचे रहेगा। वहां से वो नीचे आ भी जाता है, समझो आप नीचे आ भी जाता है, तो हमें घबराना नहीं है। हम क्या वो एक कई बार वो क्या होता है, एज अ इमैच्योर ट्रेडर आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट इन माय प्रीवियस ट्रेडिंग, दैट एंटिसिपेशन में क्या है, गिर जाएगा, मेरा प्रॉफिट लूज हो जाएगा, वो घबराहट में मैं स्टॉक बेच देता हूँ रादर देन माय एग्जिट आ रही है नहीं है। So we have to develop a certain mindset to be tolerant against the volatility, right? Second thing in trading is zero sum game. So trading, is a zero sum game. मतलब one has to lose if you want to win, right? अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो सामने वाले को, जिसको आपने एक्सचेंज में बेचा है, उसको लॉस भी होगा. So you have to be very robust on your edge, because why you are winning against someone, because you have some edge which is your personal, and you are very good at it, and उस सामने वाले के पास वो नहीं है. इसीलिए वो लूज कर रहा है और आप विन कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी कंटिन्यूअसली फोकस ऑन योर एज. जो भी मान वो एज अपने अपने हिसाब से होती है, अपने अपने कैपेबिलिटीज अपने अपने नेचर के हिसाब से होती है. सो यू हैव टू मेक दैट एज वेरी स्ट्रांग. ऐसा नहीं करना है कि भाई ये इसका ये एज है तो मुझे आई हैव टू फॉलो दैट. यू हैव टू जस्ट स्टिक योर ओन थिंग एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट. थर्ड थिंग इज ह्यूमन बिहेवियर कंसेप्ट में. फिर उसमें आती है प्रोस्पेक्ट थियरी. सो प्रोस्पेक्ट थियरी सेज दैट यू डोंट हैव टू हैव सम रीसेंसी बायस एंड यू डोंट हैव टू have some reference points. Like let's say मैंने आपको 1000 रुपया दिया, you are happy, right? आपको दोस्त को मैंने 2000 रुपया दिया, ठीक है, लेकिन उससे 1000 रुपया गुम हो गए. Now he will be sad, but at the end दोनों के पास 1000 रुपया ही है, right? So this is the concept of prospect theory. Second thing, you have to be very robust in your EQ part. You have to be very emotionally well to do trading. Third thing is habitual success. So trading is like a habit and you have to win consistently, because क्या होता है, कई बार हम
if you start to losing, you lose your faith on yourself, you lose faith on your process, and this is it. So you have to do something very continuous effort कि आप continuous win करते जाओ. Now the concept is over. Now we will focus on the trend following. So it is very simple. It is very simple. What is trend? फॉलोइंग इज ट्रेंड प्लस फॉलोइंग, राइट? तो ट्रेंड तो हमने समझ लिया, मैंने जो जर्नी ऑफ द स्टॉक बताई. कोई भी स्टॉक अगर हायर हाई कर रहा है, हायर हाई कर रहा है, तो वो ट्रेंड में है, राइट? और लोअर लो कर रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में. सो दिस इज अ ट्रेंड. सेकंड थिंग इज फॉलोइंग. What Michael Coyle says, as I explained here, that we don't know anything. We are the dumbest people on the earth, right? स्टॉक यहाँ से कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, वी डोंट नो. वी हैव टू फॉलो इट. वी हैव टू जस्ट फॉलो इट. क्यूपिड मैंने लिया था 400 पे, अभी चल रहा है 1600. आई डोंट नो कि वो 1600 से 3200 भी हो जाए, मुझे नहीं पता. आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट. आई हैव टू जस्ट फॉलो इट. आई हैव टू जस्ट राइड. ठीक है, अगर हम एंटिसिपेशन में करेंगे तो वहां तकलीफ हो सकती है. सो वी नो सिमिलर डाउन साइड. मान लो कोई स्टॉक मैंने 100 रुपए पे खरीदा है, मेरा उसका स्टॉप लॉस बन रहा है 95 एज पर माय रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. अगर वो 100 रुपए का वो बढ़ गया 110, 120, 130, आई टू जस्ट फॉलो इट. अगर वो 100 का 95 हो गया, देन मेरा स्टॉप लॉस हिट है, मैं निकल जाऊंगा. सो आई हैव टू ऑलवेज बी वन स्टेप बिहाइंड द मार्केट. मुझे मार्केट के आगे नहीं जाना है, मुझे मार्केट के पीछे पीछे ही चलना है. ठीक है, हमें कुछ नहीं पता होता कितना स्टॉक. अगर वो राकेश झुंझुनवाला जी बोलते हैं ना कि भाई 100 रुपए के एसीसी उनके दोस्त ने 1000 रुपए में बेचा था, 10,000 रुपए में बेचा था, सॉरी. So we don't know this market and we have to just follow it. So this is a trend following, right? Second thing is price trend occurs regularly. What Michael Coyle says that this is not only one bull market कि जहां आप सोच रहे हो कि यहीं पैसा बनेगा. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी मार्केट में कोई ना कोई ट्रेंड चलता ही रहेगा. 2017 में वो एनबीएफसी का दौर था, 2021 में वो आईटी का दौर था, अभी तो सभी चल रहे हैं, पीएसयू का दौर टाइम आया है. तो at any point of time there will be one trend, there will be a couple of trend in some pockets, you have to just pick it, right? Second thing is no profit targets. So यही चीज पे मेरी काफी लड़ाई होती है मेरे सम ट्रेडर दोस्तों के साथ कि वो लोग क्या करते हैं कि उनकी एक रोबस्ट प्रोसेस है कि वो वहां पिक करते हैं, फिर थोड़ा प्रॉफिट करने के बाद बेच देते हैं बिकॉज उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो वहां जंप कर देते हैं. बट एंड ऑफ द डे आई थिंक वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन मेड. सो मेरा तो ये कंसेप्ट पर मेरा ये कंफर्मेशन में ये बुक से मुझे आया कि देयर वुड बी नो प्रॉफिट टारगेट्स. अगर कोई प्राइस स्टॉक चल रहा है उसको चलने दो, उसको चलने में नहीं पता है कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाके रुकेगा. ठीक है, पीएफसी जिस मतलब जो एक सुपर अप ट्रेंड में था, क्या पता यहाँ से भी डबल हो जाए, राइट? तो वी हैव टू फॉलो द प्राइस एंड देयर इज नो प्रॉफिट टारगेट. 100 का स्टॉक 150, 200 हो गया, क्या पता 400 भी हो जाए, हमें सिर्फ फॉलो करना है. 400 से घुमा नीचे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा. हमें नहीं बेचना है 400 पे, अगर वहां से घुमा भी तो मान लो 370 पे बेचा. इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल थिंग, इट्स नॉट रियल थिंग, बट आप कंसेप्ट समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ. इफ यू रियली एब्जॉर्ब दिस कंसेप्ट एंड देन इट विल बी वेरी वेरी गुड. आप वेरी पीस ऑफ माइंड हो जाएगा आपका. ठीक है, कट योर लॉसेस फास्ट एंड लेट द प्रॉफिट्स रन. दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग कि आप प्रॉफिट को राइड करो और लॉस कट करो. अगर आपने 100 पे एंट्री ली और आपका ट्रेड गलत हुआ, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग, क्या पता गलत भी हो सकता है, 95 हो गया, यू हैव टू कट योर लॉस वेरी फास्ट, वेरी क्विक एंड फास्ट, राइट? आप निकल गए, दूसरा ट्रेड लो, उसमें चला तो ठीक है, राइड करते जाओ. But this is a very good thing, the multi-market. So what book says that you have, because you are a trader, there are a number of markets and there is a number of opportunities. So you can do multi-markets, you can do gold, you can do commodity, and some data is around with some major trend followers in the book have at least 10 to 12 एवरेज. वो आपका अपना डिपेंड करता है, किसको क्या पता है, लेकिन 10 से 11 मार्केट में वो ट्रेड करते थे. कोई कॉमोडिटी में करता था, कोई गोल्ड में करता था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो यू कैन डू मल्टी मार्केट. सेकंड, बिकॉज ट्रेंड फॉलोइंग इज वेरी सिंपल कंसेप्ट, यू कैन डू लॉन्ग एंड एज वेल एज यू कैन डू शॉर्ट. अगर लोअर लो कर रहा है, यू कैन डू अ शॉर्ट पोजीशन एज वेल, राइट? So this is a trend following system. So a simple system like you are buying at 90 days high and you are selling at 10 days low. So this is your system.
एंड 2% ऑफ द कैपिटल पर ट्रेड। सो दिस योर रिस्क मैनेजमेंट के पे मैं सिर्फ अपने कैपिटल का 2% ही एक ट्रेड पे लगाऊंगा। इफ कोई भी स्टॉक, कोई भी चीज, स्टॉक क्या, कोई भी चीज अगर 90 दिन के कंसोलिडेशन के बाद और 90 दिन के बाद एक अगर कोई चीज आगे बढ़ रही है, हायर हाई कर रही है, आई विल बाय इट एंड मैं सेल करूंगा 10 डेज के लो पे। यू हैव टू जस्ट फॉलो इट, राइट। माइकल कोवर ये भी बोलते हैं, यू डोंट नो नीड टू सी चार्ट आल्सो, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर स्टॉक कर रहा है हायर 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 हाई कर रहा है, तो यू कैन जस्ट, जो हमारी भाव कॉपी आती है ना कि भाई 90 दिन का स्टॉक का एक ही प्राइस रहा था, एक ही रेंज में रहा था, अभी वो 90 दिन के बाद एक स्टॉक बढ़ रहा है, तो यू कैन जस्ट सी दैट it has made higher high, so you can just do your trade, right? बिकॉज चार्ट में क्या होता है, बिकॉज चार्ट आप देखते हो तो यू विल डू एंटिसिपेशन कि भाई यहाँ से ये इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, एंड वी डोंट हैव टू डू एंटिसिपेशन। सो व्हाट मार्केट डू यू बाय और सेल एट एनी टाइम? यू कैन डू अ नंबर ऑफ मार्केट. How much of market do you buy or sell at any point as per your risk management system? That here it is 2% of capital, so there are number of risk management system you can follow, right? When do you buy or sell a market? So simple, at your entry it's about as per the higher high of some consolidation period and you are making buy it, you आप buy कर रहे हो। जैसे मेरी क्या सिस्टम है कि मैं एक बड़ा consolidation देखता हूँ मंथली में, मंथली चार्ट्स में, और मैं वहां अगर क्लोजिंग मिल जाता है बाय इट, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहता है और मैं फॉलो करता रहता हूँ जब तक जहां जाए। बिकॉज अभी ये कॉन्सेप्ट से मुझे क्या लर्निंग मिली और मुझे क्या फायदा हुआ कि कई बार था यार इतना डबल हो गया, अभी तो चलो, अभी वहां से वो नीचे भी आता है तो वहां प्रॉफिट गिर जाता है, तो मुझे लगता है भाई इतना आ रहा है ले लो। बट वी डोंट नो, अगर ट्रेंड में है तो वहां खड़ा रहेगा एक महीना, क्या होगा, और वहां से ऊपर चला जाएगा। जब तक मेरा एसएल नहीं आता, जब तक मेरी प्राइस सिस्टम में कुछ नहीं आता था, आई डोंट हैव टू सेल, राइट। सेकंड, व्हेन डू यू बाय और हो गया, व्हेन डू यू गेट आउट फ्रॉम विनिंग एंड लूजिंग पोजीशन? सो इन विनिंग पोजीशन यू लेट इट रन, यू हैव टू लेट इट रन, एंड इन लूजिंग पोजीशन यू हैव टू क्विक योर लॉस वेरी फास्ट। आपका जो भी एसएल हो, आपको लॉस फटाफट काटना है और दूसरी पोजीशन में जाना है, और अगर वो प्रॉफिट मेकिंग पोजीशन में आ गई, यू हैव टू राइड इट, यू हैव टू राइड इट। Some of my learning: mechanical decision. So your trading have to be very mechanical, very simple. You know, a simple thing is one you can delegate to anyone, right? जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो, आपका जजमेंट कम हो, आपका बायस कम हो। जितना आप बायसनेस, जितना आप जजमेंट लाओगे अपनी अपने बाइंग में और अपना, बिकॉज दैट देन वोंट बी योर ट्रेडिंग, दैट देन इट विल बी योर इन्वेस्टिंग, राइट? मैं जब इन्वेस्टिंग करता हूँ तो मेरा मेरा ट्रेडिंग माइंड में बंद कर देता हूँ और एक डब्बे में रख देता हूँ। सेम वे व्हेन आई एम डूइंग ट्रेडिंग, मैं अपना इन्वेस्टिंग माइंड बंद कर देता हूँ, डब्बे में रख देता हूँ। यू हैव टू डू अ सेपरेट वाली, एज नो आरजे वेरी फेमसली सेड, यू हैव टू मैनेज घर वाले एंड बाहर वाले, लाइक। सो your trading should be very mechanical. I think you have some very simple parameters system. So what you can do is, as मेरा मान लो, तुम्हें एक मंथली कंसोलिडेशन अगर हाई पे क्लोज आता है, दिस इज माय बाय, और मेरा अगर स्टॉप लॉस में रेंज में हो तो मैं वो बाय करता हूँ, अगर नहीं हो तो दूसरी स्टॉक में ढूंढता हूँ, और एक बार मेरा बाय आ गया तो आई एम जस्ट राइडिंग इट, राइट। Second thing is, price is the only indicator and pattern, as Michael Koval said, that you can just analyze price. You don't need chart, you don't need any indicator, you don't need any pattern. अगर आपको ट्रेंड मिल गया प्राइस से, यू कैन डू जस्ट एक्सेल ऑल्सो, और वो हायर हाई कर रहा है, यू टू बाय इट। अगर वो लोअर लो कर रहा है, सेल इट, दैट्स इट। बी अ रिएक्टिव ट्रेडर देन अ प्रेडिक्टिव ट्रेडर। दिस इज अ वेरी वेरी गुड लर्निंग फॉर मी। कई बार क्या होता है, अगर आप एंथुसियाज्म में काफी कुछ पढ़ते हो, काफी कुछ ये टेक्निकल एक नशा है, आप घुस जाते हो अंदर, अब भाई यहाँ से ये बढ़ेगा, यहाँ से इतना बढ़ेगा, 50% तो आएगा ही, ये कप एंड हैंडल का पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न है, कंटिन्यूअस पैटर्न है, तो हम सोचते हैं कि यहाँ से तो बढ़ेगा ही। बट कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट इज नॉट रिएक्टिंग एज पर आवर एक्सपेक्टेशन है, और एज पर आवर लर्निंग। मार्केट एक अलग ही प्राणी है, वो अपने हिसाब से ही चलता है, एंड वी हैव टू जस्ट फॉलो इट, राइट। सेकंड थिंग इज, डोंट आर्ग्यू विद ट्रेडिंग सिस्टम। हाँ, कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट आ रहा है, कंटिन्यूस बेसिस पे आ रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा है, मेरा दोस्त ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो हमें तब हमारी ट्रेडिंग सिस्टम, बिकॉज वो ज्यादा कमा रहा है, हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में हमें उंगली नहीं करनी है, भाई क्यों ज्यादा नहीं आ रहा है।
ठीक है, you have to just follow it. आपको नहीं, ऐसा नहीं कि मेरी ट्रेडिंग सिस्टम गलत होगी, ठीक है, you have to just follow it and you have to make a robust system. मल्टी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन you can do multi market, you can do commodity, you can do gold, you can do stocks, US, Indian, anything, you know. अगर आपका लॉन्ग इंडिया में हो और अगर शॉर्ट US में हो, it's completely okay. So you can do long short both. I am not doing it, I don't have any experience, but one of my friend is doing so, and it is also a very key learning from me that this can be done also. So yeah, this is it. Second thing is consistency in effort. So like anything in life, you need consistency to get results. I think trading requires a lot. It requires consistency in your efforts, requires consistency in your mindset, requires consistency in your motivations. कई बार क्या होता है, बहुत ही निराश हो जाते हैं, कई बार क्या होता है, बहुत ही उत्साहित हो जाता है. You have to maintain that. And yeah, those were my key learnings. So this was a book. This was a book, Trend Following. I hope you had great insight from the book. This was my review. I know book is kind of thing that you have to read twice or thrice to get, you know, आप जब भी book दूसरी बार पढ़ोगे आपको कुछ नया मिलेगा. So this was my first reading, and I could able to absorb this much amount of thing which I shared. So I hope you have enjoyed it. So thank you very much. This is Jamin. Bye.